أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो जिस तरह के इताअत का हक है, और रसूल की दावत से रूगर्दानी न करो जबकि तुम उसको सुन रहे हो। तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो दावा करते थे कि हमने सुना, लेकिन सुनते सुनाते कुछ नहीं थे। यकीनन अल्लाह के नजदीक बदतरीन जानवर यही बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते। अगर अल्लाह इनमें कोई भलाई देखता तो जरूर इनको सुनने की तौफीक देता, और अगर इसके बगैर सुनवा देता तो ये बेरुखी के साथ मुंह फेर जाते। Believers, obey God and His Messenger the way they should be obeyed, and do not desist from the call of the Messenger when you are listening to him. Be not like those who claimed, "We listened," but they never listened. Surely before God the worst of animals are these that are deaf and dumb who do not use their intellect. Had God seen any good in them, He would have definitely given them the urge to listen, and if He had made them listen without this, they would have turned away in indifference.